In this lecture, we are going to start with the next topic of the next unit, that is unit number 6, tractable and intractable. So, first of all, we'll see what is the tractability of problem. So, the tractability of problem refers to difficulty of a problem. Difficulty in terms of amount of time it takes to solve that problem. Tractability is related with the time complexity of a solution program. So, see here, what is the meaning of tractability? It identifies the difficulty of particular problem. If that problem is solved in solvable time or in less time, then that problem comes under tractability problem. Okay. Some common functions ordered by how fast they grow, that is shown over here. So for example, the constant here there are some functions and the complexity of that function is shown over here. Okay, so constant, the complexity of constant is big of 1. Logarithmic will be shown using the complexity as big of log n. Linear big of n log n, that is big of n multiplied by log n. Quadratic n square, cubic n cube. Likewise, it is shown over here. So now what is the polynomial function? So any function that is in the form of n raised to power k for some constant, that we called it as a polynomial function. For example, big of 1, log n, big of n, these are what the polynomial function. Now what is the exponential function? Which comes under the raised to power, that is nothing but the exponential function. So big of 2 raised to power n factorial, n raised to power n, these are nothing but the exponential functions. Now what is tractable? So the problem that can be solved in reasonable time is called the tractable, that we already saw. A problem that is solvable by a polynomial time algorithm, or here are some example of tractable problems, that is polynomial time algorithm. Means अगर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दैट प्रॉब्लम कम्स अंडर द ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, कि उसका टाइम हम लोग बता सकते कि इतने टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, दैट प्रॉब्लम कम्स अंडर द ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम. उसी को नेक्स्ट डेफिनेशन के तौर पे ऐसे देखा जाता है कि अ प्रॉब्लम दैट इज सॉल्वेबल बाय अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम, दैट इज़ नथिंग बट द ट्रैक्टेबल. तो जो प्रॉब्लम का टाइमिंग हमें पता है, कम टाइम में सॉल्व होता है, दैट प्रॉब्लम कम्स अंडर द पॉलिनोमियल टाइम. ठीक है, उसे बोला जाता है कि पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम से वो सॉल्व हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अ प्रॉब्लम दैट इज सॉल्वेबल बाय अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम इज नथिंग बट द ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम. सो हियर आर सम examples given for the tractable problems which is solved by the polynomial time algorithm, that is searching an unsorted list, searching an order list, sorting a list, multiplication of integers, finding a minimum spanning tree in a graph. Now what is intractable then? So the problem that can be solved but the amount of time is takes to solve is too large. मीन्स अगर उस प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है लेकिन उसके लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज़ नॉट फिक्स, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट कम्स अंडर द इंट्रैक्टेबल. उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए उसके नेम में ही उसका मीनिंग छुपा है इंट्रैक्टेबल. हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ नथिंग बट द इंट्रैक्टेबल. अ प्रॉब्लम दैट कैनॉट बी सॉल्व बाय पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम. अगर इंट्रैक्टेबल है, उसका टाइमिंग पता नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं होगा. So can be solved in reasonable time only for small inputs or cannot be solved at all, right? So as their input goes large,
we are unable to solve them in reasonable time. For example, the traveling salesman problem. So this is nothing but the what is the meaning of tractable and intractable. So what is tractable? The problem which can be solved in fixed amount of time is nothing but the tractable, or the problem that can be solved using polynomial time algorithm, that is tractable. What is intractable? The problem can be solved, but the amount of times it takes to solve is very large, and that problem cannot be solved by using a polynomial time algorithm, is nothing but the intractable. Now next, classification of problems we'll see. So the problem can be categorized using 4 different categories: P, NP, NP complete and NP hard. P is nothing but the polynomial time, deterministic polynomial time, non-deterministic polynomial time, NP complete and NP hard. ठीक है. So what is the class P problem that you will see? So P is the set of all decision problems solvable by deterministic algorithm in polynomial time. P means what? Whatever the problem solved in polynomial time using the deterministic algorithm, that is nothing but that problems comes under P class. ठीक है. Deterministic means what? उसका solution निकलेगा ही, right? So there are certain polynomial time algorithms, that is decision problem, deterministic algorithm, sequential execution, no parallel processing. For example, binary tree search, the time complexity is big O log n, only one node comparison at a time, no parallel comparison is allowed, then this binary search comes under the class P problem. Now what is class NP? That is non-deterministic polynomial time algorithm. Means जो amount of time है required, that may be large, right? That is not decided, non-deterministic, right? So the problems can be deterministic problem, non-deterministic algorithm, parallel computation, polynomial time complexity. So the traveling salesman problem is the best example for NP class. Next is class NP. So NP is the set of all decision problems solvable by non-deterministic algorithm in polynomial time. ठीक है, जिसका टाइमिंग हमें पता नहीं है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक algorithm से हम लोग वो पॉलिनोमियल टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट प्रॉब्लम्स कम्स अंडर द NP प्रॉब्लम. तो set of all problems which can be solved by a non-deterministic Turing machine in polynomial time, that is also class NP problem, or the problem whose solution can be verified in polynomial time on a deterministic machine, that also comes under the class NP. Okay. So if we are given a certificate of solution, we can verify that the certificate is correct in polynomial time in the size of input to the problem. For example, traveling salesman problem. ठीक है. What is non-deterministic algorithm? So these algorithms are allowed to contain operation whose outcomes are limited to a given set of possibilities instead of being uniquely डिफाइंड. डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है दैट इज़ यूनिकली डिफाइंड होते हैं. नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, यूनिकली डिफाइंड नहीं होते, लेकिन कितने सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं दैट वी कैन डिफाइन. तो मशीन कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन. So this is all about the class P and NP problem. So we'll see the relationship between this P and NP problems. An unsolved problem in computer science is whether P is equals to NP or is P is a subset of NP. So any problem that can be solved by deterministic machine in polynomial time can be solved by non-deterministic machine in polynomial time. अगर डिटर्मिनिस्टिक मशीन से पॉलिनोमियल टाइम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो ऑब्वियसली दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन आल्सो इन पॉलिनोमियल टाइम, राइट. तो सम NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर गिवन ओवर हियर. सो दैट इज ग्राफ कलरिंग,
TSP, bin packing, knapsack, subset, sum, mini newsware, many more. Now polynomial problems क्या होते that we'll see. Polynomial time problems example we'll see. Okay. So minimum spanning tree. This is one of the problem of polynomial time algorithm. ठीक है. So minimum spanning tree algorithm, there are various algorithms present to find out the minimum spanning tree. So what is that? First we'll see. So undirected weighted graph G is equals to VE, that is vertices and set of edges is given. So V is nothing but the set of vertices, E is nothing but the set of edges, and W of U comma V is nothing but the weight of edge containing vertices U and V. So what is the objective of this? Find the acyclic subset of edges that covers all vertices and whose total weight is minimized. मीन्स हमें क्या करना है, एक असाइक्लिक सबसेट ऑफ एजेस फाइंड आउट करने हैं जो सारे वर्टाइसेस उस ग्राफ के कवर करे विद द मिनिमम वेट. ठीक है, दिस इज नोन एज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ठीक है. सो टोटल वेट हाउ वी कैन कैलकुलेट? सो टोटल वेट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ ऑल एजेस बिलोंगिंग टू दिस minimum spanning tree. So application of this is nothing but designing an electronic circuit with a set of n pins and wires. Objective: connecting all the n pins and minimum wire required is n minus 1. What is the aim of this? To choose the best circuit among all possibilities that incurs minimum expenses if wires are of different cost. Now example of this is given over here. First left hand side is nothing but the graph that is given, and right hand side is nothing but the minimum spanning tree that can be find out from that particular graph. Okay. तो हमें एक ही साइकिल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय कंसीडरिंग द मिनिमम वेटेड एज, राइट, बाय डिफरेंट वर्टाइसेस. सारे वर्टाइसेस लेकिन कवर होने चाहिए, राइट, और साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए. सो सी हियर, ए से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है? 5, राइट. सो वो इंक्लूड हो गई. देन ए से डी तक गए हम लोग. डी से मिनिमम वाली कौन सी है? 6, और ए से मिनिमम वाली कौन सी है? 7. सो इसीलिए हमने 6 कंसीडर की. नाउ नेक्स्ट कम्स एफ. एफ से मिनिमम वाली 8 है और ए से मिनिमम वाली 7 है, इसीलिए हमने 7 कंसीडर की. नाउ बी एंड एफ से फिर से हम लोग देखेंगे. तो बी से मिनिमम वाली 7 है, एफ से 8 है, तो हम लोगों ने इसीलिए बी से मिनिमम वाली 7 ली और ई पे आए. नाउ एफ से मिनिमम वाली 8 है अभी, और ई से मिनिमम वाली 5 है, इसीलिए 5 कंसीडर की, राइट. नाउ सी से मिनिमम वाली और एफ ई से मिनिमम वाली कौन सी है अभी? ना एफ से मिनिमम वाली और सी एंड ई से मिनिमम वाली कौन सी है? 8 एंड 9. लेकिन 8 अगर कंसीडर करते हैं तो साइकिल फॉर्म होती है, इसीलिए 9 कंसीडर की, राइट. सो लाइकवाइज हमारी जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें मिल गई. क्लियर? नाउ देर इज़ वन algorithm which can solve this, that is nothing but the Kruskal's algorithm, which find the minimum spanning tree for a connected weighted graph G, right. So E is nothing but the set of edges in the graph in unsorted order of their weights. Time complexity required is E log E. While T has less than n minus 1 edges, E is not empty. Okay. Set of edges is not empty. Choose an edge V, E from E of the lowest cost. क्रुस्कल्स एल्गोरिथम वर्क कैसे होता है? मिनिमम वेट वाली एज हम लोग उठाते हैं फ्रॉम द ग्राफ. इट्स नॉट लाइक कि कोई भी वर्टाइसेस से हम लोग उसे उठाते हैं. हम लोग डायरेक्टली मिनिमम वेट वाली एज उठाते हैं और उसको डिलीट करते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ एजेस, एंड साइकिल में उसे ऐड करते हैं मिनिमम ट्रैवर्स ट्री. ठीक है. Now see here, this is the graph given. हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये ग्राफ गिवन है, इसमें से मिनिमम वेट वाली हम लोग डायरेक्टली उठाएंगे.
तो फर्स्ट मिनिमम वेट वाली कौन सी है 50, नहीं सॉरी 40, तो इसीलिए 40 का मैनचेस्टर आया एक, सॉरी 30 है तो इसीलिए लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में का आया 30। नेक्स्ट है 40, सो 40 वाले दो हमने उठाए। नेक्स्ट है 50, इसीलिए 50 वाले हमने उठाए तीन, राइट। नेक्स्ट है 70, 70 से नहीं उठाया क्योंकि वो साइकिल फॉर्म कर रहा है एक, और दूसरी उठाई वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रही। तीसरी उठाई क्योंकि वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रही, राइट, क्योंकि ट्री में साइकिल रहती है क्या, नहीं रहती है। नेक्स्ट 80, 80 हमने उठाई दो, राइट, दोनों इससे साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट 90, 90 नहीं उठा सकते क्योंकि उससे साइकिल फॉर्म होगी। तो हो गए सारे वे, राइट। सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट. So we'll stop over here.